Okay, now let us discuss some of the questions from the practice sheet. We have discussed some concepts. First we have discussed what exactly is the linear equation in two variable. Then second we have discussed what is the practical application of this chapter of this linear equations in two variables. Third we have discussed methods to solve a linear equation in two variable. That is, the first method is hit and trial that we have discussed in the first class. Second method is by graphical method कि graph पे you need to plot the linear equation and then determine its solution. Then we have discussed about the pair of linear equations. Okay, so based on these concepts we need to solve some of the questions that I have designed. These questions are from question number 1 to 6. So from the practice sheet we will going to discuss question number 1, and in question number 1 we will discuss the first part and the fourth part. Okay, so let us read the question number 1. Which of the following pair of linear equations are consistent, inconsistent, deduce graphically? Okay, so in this question we need to determine which of the pair of linear equation is consistent or inconsistent, and that too we need to do it graphically. Okay, so before doing this question, before solving this question, let us remind the basic concept that we have studied. We have studied about the graphical representation of a linear equation, how to draw a linear equation on graph, and we have also studied how to determine that a pair of linear equation is consistent or inconsistent. That is, either you draw it on graph, and let us check by drawing it on graph if the equations, the straight lines are intersecting at one point, it means that equation represents two consistent linear equations, that is, a pair of linear equation is consistent. If they are not intersecting, they are parallel to each other, the two straight lines are parallel, it means the equation, the pair of linear equation is inconsistent. And third is that if the two lines, the two straight lines are overlapping each other, they are coincident, then we have said that this kind of solution, this kind of pair of linear equation is consistent because it will going to have infinite number of solutions. So for question number 1, either you can do it, for example, the first part is you have two linear equations, 5x minus y is equals to 7, and the second linear equation is x plus 2y is equals to 8. Now we can solve it by two methods. First, या तो हम जो ratios निकाल के solve करते हैं, that is the consistency check करते हैं, either उस method से हम solve कर लेते हैं या फिर इसको graphically draw कर लेते हैं. मैं इस वक्त आपको दोनों methods बताना चाहता हूँ. Okay, so first let us solve this question by ratios. पहले हम इसे रेशो वाले रिलेशन से सॉल्व करते हैं. रेशो वाला रिलेशन मतलब वी हैव स्टडीड थ्री रिलेशंस फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, दैट इज द रेशो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x, रेशो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ y एंड रेशो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट टर्म. ओके, now let us check the ratio, the values of the coefficients and the constant term in both the equations. For example, this first equation, it can be written as 5x minus y minus 7 is equals to 0. Now comparing this equation with the general equation, that is a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, you will find that a1 is equals to 5, b1 is equals to minus 1 and c1 is equals to minus 7. Similarly, the second equation, this is the first equation. The second equation is x plus 2y minus 8 is equals to 0. इस 8 को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, that is in RHS से LHS में लेके आ जाता हूँ, तब क्या होगा, तब ये इक्वेशन ऐसी दिखाई देगी. Now comparing this equation with a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, we will find that a2 का वैल्यू हो जाता है 1, b2 का वैल्यू हो जाता है 2 एंड c2 का वैल्यू हो जाता है -8.
So these are the three values of coefficients and the constant term from the second equation. Now let us check the ratio of x, the coefficients of x. So ratio of coefficients of x is a1 upon a2. What is the value of a1? a1 का value दिख रहा है हमें 5 और a2 का value is 1. So a1 is 5 upon a2 is 1. So the ratio of a1 upon a2 is equals to 5 upon 1 or 5 is to 1. Similarly, the ratio for b1 is to b2. b1 upon b2 कितना आ रहा है? b1 is -1 and b2 is 2. So b1 upon b2 is -1 divided by 2. This is the ratio for coefficients of y. Then third is c1 upon c2. So c1 upon c2 जब हम निकालेंगे, so you will find c1 कितना है -7, c2 कितना है -8. तो we will find that it will be -7 upon -8. Okay, that is 7 upon 8. Now let us compare these three ratios. Now we have studied that if the a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then we don't need to check c1 upon c2. हमें c1 upon c2 को चेक करने की जरूरत नहीं है. अगर a1 upon a2 और b1 upon b2 ही not equal आ गए, unequal आ गए, then we will say that this pair of linear equation will be consistent and they will have one solution. They have one common solution. So here we can see that, let us say this is equation 1, this is equation 2 and this is equation 3. So we can see that from equation 1, 2 and 3 you will find a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Not three equation, the first two equations. So first two equation से हम ये जज कर सकते हैं that a1 upon a2 और b1 upon b2 इक्वल नहीं है. तो जब a1 upon a2 और b1 upon b2 इक्वल नहीं होते तब क्या कंडीशन होती है? हमने कल कंडीशन के बारे में पढ़ा था. तो कंडीशन ये होती है कि if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, it means this pair of linear equation is consistent. ये pair of linear equation कैसा है? It is consistent and it will have only one solution and it will have only one solution. सिर्फ एक ही solution possible होगा इसका. Then हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर एक pair of linear equation consistent है और उसके पास एक ही solution है तो graphically वो कैसा दिखाई देगा. So graphically I will write, graphically this pair of linear equation will be two straight lines intersecting at one point. Graphically कैसा दिखाई देगा? It will look like two straight lines intersecting at one point because consistent है और a1 upon a2 b1 upon b2 के बराबर नहीं है. So we can say that this pair of linear equation is consistent. So this is the method that we have solved without using the graph. अगर ऐसा कहा जाता don't use graph या deduce without graph, then हम ये solution apply करते, सिर्फ ये check कर लेते. Now in this question it is asking that you need to deduce this by graph. You need to deduce graphically. So graphically deduce करने के लिए क्या होगा? You need to draw the solution table. The solution table. Solution table मतलब for example the first equation is 5x minus y is equals to 0. So 5x minus y is equals to 0 का हम एक टेबल बनाएंगे like this. This is, let us say, x, this is y. Now depending on the 0 nahi 7. Now depending on the value of x we can deduce the value of y. Let us say x is equals to 1.
अगर x का वैल्यू 1 डाला तो 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7, तो 5 को वहां ले जाएंगे, तो 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7 में माइनस वाई विल बी इक्वल्स टू 7 माइनस 5 दैट इज 2, सो y का वैल्यू आ जाएगा -2. ओके, नाउ उसके बाद अगर मैंने x को 2 डाला तो 5 2 सा 10 होता है, तो 10 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, तो ये -10 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई विल बी इक्वल्स टू 7 माइनस 10 दैट इज माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3. सो माइनस वाई -3 के बराबर है, मतलब y इज इक्वल्स टू 3, सो इट विल गिव यू 3. ओके, दिस इज द सॉल्यूशन टेबल फॉर द फर्स्ट इक्वेशन. देन द सेकंड इक्वेशन इज x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8. x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8. सेम इसी तरह से हमें यहां पर भी टेबल बनाना है. सेम इसी तरह से टेबल बनेगा. दिस विल बी x, दिस विल बी y. नाउ अलग अलग x का वैल्यू रखेंगे तो अलग अलग y का वैल्यूज मिलेगा. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट सम वैल्यू ऑफ x. अब x का वैल्यू यहाँ पे क्या रख सकते हैं, रैंडमली जो आपको अच्छा लगे वो रख सकते हैं, बट कौन सा रखना सुटेबल होगा अगर हम इस चीज की बात करें. तो देखिए दिस इज 2y, तो अगर मैं x को कोई एक इवन नंबर रखता हूं, ऐसा नंबर जो कि 8 से सब्ट्रैक्ट होने पे एक इवन नंबर दे दे, तब हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन इजी हो जाएगा, तब इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा. बिकॉज यहां से y का वैल्यू कैसा आ रहा है, y इज बेसिकली व्हाट, 2y इज इक्वल्स टू 8 माइनस x, तो y इज इक्वल्स टू 8 माइनस x डिवाइड बाई 2. y का वैल्यू आ रहा है 8 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2. सो यहां पर हम x की अलग अलग वैल्यूज रख के देखते हैं. x का वैल्यू 0 रख दिया जाए तो अगर x 0 है तो 8 माइनस 0 इज 8, 8 अपॉन 2 इज 4, तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा. x का वैल्यू आप 4 रख के देख लीजिए. x का वैल्यू जब हमने 4 रखा या 2 रख लिया या 4 या 6 या और कोई रैंडम वैल्यू या 8 रख लिया जो कंफर्टेबल लगे, तो हम यहाँ पे x का वैल्यू 4 रखते हैं. 8 माइनस 4 इज 4, 4 divided by 2 is 2, so this will give you 2. Okay, so this is the solution table for this equation. Now what you need to do, you need to plot these two equations on graph, and when you plot these two equations on graph, you will find that these two equations represent two straight lines which are intersecting at one point. Okay, so graphically plot the two equations and check number of solutions. Okay, graphically plot two equations and check the solution. You will find they are intersecting at one point. Okay, and I am not plotting the graph because to plot the graph you know how to plot the graph. It's very basic concept, so simply you need to plot it. Okay, so this is the solution for the first part of question number 1. So इसे note कर लीजिए, then we will solve the fourth part. Okay, now let us solve the fourth part of question number 1. Again, the fourth part is same as question number as the first part. Fourth part, we have two equations, that is a pair of linear equation. 3x by 4 plus 8y by 7 is equals to 13 by 28, and the second equation is 21x plus 32y is equals to 13. Okay, so we have two linear equations and we need to deduce that this pair of linear equation is consistent or inconsistent graphically. Okay, so we need to deduce this graphically. It means we need to plot the graph for this equation. We need to plot x-axis and y-axis and the two straight lines for this equation. Now before plotting the graph for this pair of linear equation, let us deduce that is this pair of linear equations consistent or inconsistent without graph, without using graph, that is by use of ratios, by use of the relation of coefficients of x and y.
okay, and the constant terms. So first let us deduce it by ratios. So for deducing, this is our equation, 3x by 4 plus 8 by 7y minus 13 by 28 is equals to 0. So we will have a1 is equals to 3 by 4, b1 is equals to 8 by 7 and c1 is equals to minus 13 by 28. Similarly, the second one, this is 21x plus 32y is equal minus 13 is equals to 0. These are the two equations we have. Now from the second equation the value of constant, the coefficient of x, that is a2, is 21. The coefficient of y, that is b2, is 32, and the coefficient of and the constant term c2 is minus 13. Okay. So we have the coefficients of both the equations and the constant term for both the equations. Now let us deduce the ratios. The ratio of a1 and a2, that is a1 upon a2. a1 upon a2 will be equals to, a1 is 3 by 4 and a2 is 21. So 3 by 4 divided by 21. Now solving this will be 3 upon 4 into 21. So this is 3 7s are 21 and this will give you 1 upon 28. Okay, so a1 upon a2 is equal to 1 upon 28. Then next we will deduce the ratio for b1 upon b2. The ratio for b1 upon b2 is 8 by 7 divided by 32. This is 8 by 7 divided by 32. Now solving this will give you 8 upon 7 into 32. 8 1s are 8, 8 4s are 32. This will give you 1 upon 28. This will give you 1 upon 28. Similarly c1 upon c2. So c1 divided by c2 is equals to, c1 is minus 13 by 28. This is minus 13 by 28 divided by minus 13. Now solving this, minus minus get cancelled. This will give you 13 divided by 13 into 28. Now 13 ones are 13, 13 ones are 13. This will become 1 by 28. Okay. So we have three relations. Let us say this is equation 1, this is equation 2, this is equation 3. So we have three equations. Now I can say that from equation 1, 2 and 3. Now just check this, a1 upon a2 is 1 upon 28. b1 upon b2 is also 1 upon 28, c1 upon c2 is again 1 upon 28. It means we will find that from three equations a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. So this is the relation that we have from these three equations, these three ratios. Now what we have studied about the condition like this, a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, all the three ratios are equal, and we know कि जब तीन ratios equal होते हैं then what exactly happen. जब तीनों ratios equal होते हैं, that is the coefficient of x, coefficient of y and the constant term, then we will say that the pair of linear equation is consistent. Pair of linear equation is consistent. Okay, the pair of linear equation कैसा है, ये consistent है, and since all the three ratios are equal, it means pair of linear equation will have infinite lines, infinite solutions.
इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे? देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बिकॉज तीनों रेशियोज बराबर आ रहे हैं एंड वी हैव स्टडीड दिस कंडीशन कि तीनों रेशियोज बराबर होते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं एंड व्हाट वी विल से द स्ट्रेट लाइंस आर द टू स्ट्रेट लाइंस आर कोइंसिडेंट. टू लाइंस आर कोइंसिडेंट. coincident or overlapping. The two lines will be overlapping or coincident. इस तरह से हो जाएगा. Okay? It means we have decided, we have seen, we have solved that the two lines will going to be coincident. ये चीज तो हमने पता लगा ली. Okay? So if the question comes that deduce the number of solution of these two or consistency of these two equations or this pair of linear equation without graph, then you need to apply this method. इस तरह से आपको तीनों रेशियोज निकालने होंगे और तीनों रेशियोज निकालने के बाद आपको चेक करनी होगी ये कंडीशन और जहां ये कंडीशन चेक हो जाएगी देन वी कैन इजीली डिड्यूस कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा. नाउ ये तो हुआ विदाउट ग्राफिकली, लेकिन अगर ग्राफिकली करना है तो अगेन द सेम मेथड दैट वी हैव स्टडीड फॉर द फर्स्ट सॉल्यूशन, दैट इज द सॉल्यूशन टेबल. आपको सॉल्यूशन टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा. सॉल्यूशन टेबल जैसा कि फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x/4. द फर्स्ट इक्वेशन इज 3x/4 प्लस 8/7y इज इक्वल्स टू 13/28. ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. सो इसको सॉल्व कैसे करें? सो टू सॉल्व दिस इक्वेशन द सॉल्यूशन टेबल कुछ इस तरह से बना लेते हैं. नाउ दिस विल बी x and this will be y. Now to choose the value of x and y, since यहाँ पे ये हमें fractions दिखाई दे रहे हैं तो बेटर ये होगा कि अगर इस इक्वेशन को हम एक ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई कर दें सच दैट ये सभी फ्रैक्शंस हट जाएं. ऐसा कुछ कोशिश करें कि ये फ्रैक्शंस को हटा सकें. सो इन फ्रैक्शंस को हटाने के लिए हम ऐसा सोचते हैं कि हम 4 को हटाना है और 7 को हटाना है बिकॉज x और y के कोएफिशिएंट को हम इंटीग्रल बनाना चाहते हैं. So we will multiply this equation by 4 into 7. इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 4 into 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे then you will find this equation becomes this 4 and 4 will get cancelled, 7 3s are 21, x plus 7 and 7 will get cancelled, 8 4s are 32, y is equals to 13. Okay? So ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा. Now let us choose different values of x and y and you can easily deduce the solutions for this table. Okay? Let us say x is equals to 0. अगर x is equals to 0 होता है तो y will be 13/32 and if y is equals to 0 then x will be 13/21. ओके इस तरह से सेकेंड इक्वेशन का भी सेम सॉल्यूशन है. सेकेंड इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है. सेकेंड इक्वेशन यही वाली है बिकॉज हमने ये पता लगा लिया कि ये सेम है. ओके, द टू इक्वेशंस आर ओवरलैपिंग. इफ टू स्ट्रेट लाइंस आर ओवरलैपिंग देन डेफिनेटली दे विल गोइंग टू हैव द सेम इक्वेशन. ओके, सो लाइक दिस यू कैन सॉल्व दिस और इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर लीजिए. नाउ कंफ्यूजन ये होता है कि इस तरह के वैल्यूज को ग्राफ पे कैसे बनाया जाए. सो देखिए जब आप इस तरह के वैल्यूज को ग्राफ पे बनाते हैं सो इट डजंट मैटर कि आपको एग्जैक्टली सेम वैल्यू लेनी है. 13/21 जो वैल्यू लिया हमने या 13/32 जो वैल्यू लिया ये आप अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं. इट डजंट मैटर कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू ही लेना है. 13/21 जहां पे आ रहा है वही वैल्यू लेना है. आप सिंपली 13/21 को अप्रोक्सीमेट कर लीजिए और वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू को प्लॉट कर दीजिए. ओके, इट्स बिकॉज कि आप जब इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे यू विल फाइंड कि दोनों इक्वेशन तो सेम है, इसीलिए सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ करनी है. आपको 2 सॉल्यूशन टेबल बनाने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ एक सॉल्यूशन टेबल बना के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, वैसे तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है जनरली वो ऐसा ही आता है दैट टू रिड्यूस द कंसिस्टेंसी विदाउट ग्राफ, विदाउट यूजिंग द ग्राफ पेपर. ओके, तो उसमें ये मेथड आपको अप्लाई करना है. So this is the solution for fourth part of the question number 1. So you can note this and then we will discuss the second part.